Good morning, children. Class 9, Subject Maths, Chapter number 6, Introductions to Lines and Angles. And first, I will explain you what is line. Line एक सीधी लाइन होती है जिसका सिर्फ लेंथ ही होता है, ब्रेथ नहीं होता है, तो वी कॉल के लाइन इज अ ब्रेथलेस लाइन. एंड द सेकेंड इज इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन दो लाइन्स है, they are intersecting each other at the same point. We call these lines are intersecting line. Third is parallel lines. Parallel lines never meet each other at any point. Now I will give you little introduction of angles also. Angles. First angle, you all are know that acute angle. Acute angles are those angle which is less than 90 degree, जो 90 डिग्री से कम होता है. एंड ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है. एंड थर्ड इज राइट एंगल. राइट एंगल इज इक्वल टू 90 degree. Thus, and fourth is straight angle. Straight angle is equal to 180 degree. Straight angle, ये angle, straight angle. Now fifth is straight angle and now linear pair. Linear pair is also linear angle we can say, yeah, linear pair, it equal to 180 degree. Linear pair is also if this whole straight angle was divided by one arm into two equal part, तो we can say it is also linear pair. इसका सम और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री. नाउ सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो linear pair. नाउ सिक्स्थ इज reflex angle. Reflex angle is greater than 180 degree and less than 360 डिग्री. अगर कोई एंगल है तो ये हमारा इंटीरियर एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल हमेशा एंगल के बाहर वाला. दिस इज अवर रिफ्लेक्ट, ये है रिफ्लेक्ट एंगल. नाउ seventh is complementary angle. Complementary angle is also equal to 90 degree. This is our right angle triangle, because right angle triangle is always equal to 90 degree. If right angle triangle is divided by one arm, so suppose it is 30, so this is 60. When you do sum of these two angle, x plus y, means x plus y, it should come 90 degree, so we can say it is a complementary angle. This angle is 30 plus 60 is equal to 90 degree, so we can, these are complementary angle. Eighth point, supplementary angle. Supplementary angle equal to 180 degree.
सप्लीमेंट्री एंगल भी हमारा 180 डिग्री होता है, या वी कैन से स्टेट एंगल. इट वाज डिवाइडेड, सिंगल आर्म से डिवाइड हो या टू आर्म से डिवाइडेड हो. इफ़ यू डू सम ऑफ दिस एंगल मीन्स x plus y plus z, the sum of x plus y plus z it equal to 180, so we can say it is a supplementary angle. Now ninth is adjacent angle. Adjacent angle, any angle, भले वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट एंगल हो, दैट एंगल वॉज डिवाइडेड बाय वन सिंगल आर्म. दैट आर्म शुड बी कॉमन बिटवीन दिस टू एंगल. सपोज ए बी सी एंड डी. तो आई कैन से एंगल, आई एम राइटिंग एंगल 1 एंड एंगल 2. दिस इज angle 1 and this is angle 2. So we can say angle 1 is adjacent to angle 2, or we can say angle 2 is adjacent angle to angle 1. Only one arm should be common between two angle, then only this angle is adjacent angle to this and this is adjacent angle to this. Now 10th, corresponding angles are equal. I'm drawing one diagram. This parallel line was intersected by this transversal. I'm naming the angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corresponding angles are angle 1 is equal to angle 5, angle 3 is equal to angle 7. It is left hand side का किया, now we'll do right hand side. Angle 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8. Now 11th, I am taking alternate interior angle. Now the angle between two parallel lines are interior angles. तो एंगल 3 इज ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्रॉस में होते हैं. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 and angle 4 is equal to angle 5. Now 12th, now this is interior angle because it is between two parallel lines. Now alternate exterior angles are equal. Alternate interior angles are also equal. Angle 1 is equal to angle alternate interior angles are equal. Angle 1 अभी हम we going to talk outside the parallel line. These angles are 1, 2 and 7 are out in exterior angle. Angle 1 alternate में हमेशा क्रॉस में ही लेते हैं. The angle 1 is equal to angle 8 and angle 2 is equal to angle 7. Now 13, co-interior angle. Their sum is equal to 180 डिग्री. co-interior angles कौन से होते जो ये है पैरेलल लाइंस के अंदर, बिटवीन द पैरेलल लाइंस. एंगल 3 plus angle 5 should come 180 degree and angle 4 plus angle 6 equal to 180 degree. Now 14 is vertically opposite
angle are equal. Now vertically opposite angles, angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 3. Angle 1 is equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 2, and here angle 5 is equal to angle 8, angle 7 is equal to angle 6. Thank you children.